एक्सपेंडिचर मेथड इज डैश यूज टू कैलकुलेट एनआई नेशनल इनकम. देखो प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड ही ज्यादा यूज होता है. एक्सपेंडिचर मेथड तो रेयरली यूज होता है बिकॉज वो फाइंड आउट करना ही डिफिकल्ट टास्क है अपने आप में. सो इट इज रेयरली used. Dash refers to wear and tear of capital asset. Wear and tear of capital asset मतलब depreciation. Next, income method is also known as dash. Income method को क्या बोलते हैं और factor cost method. Factor cost method. Expenditure method is also known as dash. Expenditure method is also known as dash. Outlay method. Product method is also known as dash. Product method is also known as output method. Product method को output method भी बोलते हैं. An economy which has trade relations with the rest of the world is called as open economy. क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रही है, ट्रेड अलाउड है, इट इज एन ओपन इकोनॉमी.